database and permanently storing our data. So in this class, we will learn how we can, what this Docker is and how we can create, how we can run this Postgres server locally, and we can directly use this Postgres DB. Okay, and how we can connect our project to this database, and then how we are how we are how we can connect our project to the database, and how we can utilize this. So let's start with Docker. Actually, what we will first understand what this Docker actually is. So, so okay, so any of you like before this session, like apart from me, like मैंने बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया है कि कैसे लाइक व्हाट डॉकर इज, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स तो मैंने पहले से बता रखा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट any of you like know anything about Docker, like what this Docker is? Anyone? Okay, cool, no problem. Like see, Docker जो है लाइक समटाइम्स क्या होता है कि जब भी हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं या फिर ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को लाइब्रेरीज या लाइक पाइथन जैसे टूल्स, लाइक लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज टूल्स वगैरह हम लोग को इंस्टॉल करना रहता है, राइट? या पोस्टग्रेस, ठीक है, या फिर एनी टेक स्टैक लाइक नोड एंड ऑल। तो क्या होता है कि समटाइम्स हम लोग प्रोजेक्ट तो अपने सिस्टम पे क्रिएट कर लेते हैं, देन इफ वी आर शेयरिंग दैट सेम प्रोजेक्ट यूजिंग गिटहब, आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट दिस गिटहब इज। गिटहब सबको पता है? ओके, सो ठीक है। सो गिटहब क्या होता है कि इट्स सिंपल, लाइक वी आर वी आर जस्ट पुशिंग आवर कोड देयर, एंड फ्रॉम देयर वी कैन directly share our code with anyone. Okay, so it's kind of basically hosting our code. So so through the Docker Hub, when we are through this GitHub, when we are sharing our code through any repo to anyone, देन व्हाट हैपेंस कि उस केस में क्या होता है कि उसको दोबारा से अपने सिस्टम पे वो सारी चीज़ें, वो सारी टूल्स, नोड, पोस्टग्रेस, सर्वर्स, एवरीथिंग उसको फिर से दोबारा से इंस्टॉल करना रहता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि उसका उसके सिस्टम पे वो सारी चीज़ें नहीं रन कर पाती हैं प्रॉपरली, और उसको थोड़ा टाइम लगता है, राइट? मे बी आप सभी ने लाइक कभी ना कभी ये ट्राई किया होगा और कभी ना कभी ये इशू फेस किया होगा। सो उसी को रिजॉल्व करने के लिए founders ने like industry people have created this Docker, which is open source, and इस Docker में क्या है कि ये क्या करता है कि हमारे एप्लीकेशन को, हमारे पूरे जो भी हम लोग बैक एंड फ्रंट एंड लिखा है उसको पूरा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। Suppose we are creating any application here on our system, then and we are using Docker to create its image, and then using containerization to run its image as in the inside the container. I will explain these all words which I am saying, like what this image is, what this container is, okay, to you all. So you need not to worry about that. तो उसमें क्या होता है कि हमारा ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो डॉकर है हमारा वो क्या करता है, उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। एंड सो जब भी हम अपना कोड शेयर कर रहे होते हैं या फिर, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द कोड वी आर जस्ट शेयरिंग द डॉकर इमेज, एंड उसमें वो क्या करेगा, अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल करेगा, एंड देन ही विल पुल द इमेज एंड रन द कंटेनर। ठीक है, इट्स इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि लाइक आपने जैसे कोड लिखा और उसको गिटहब रेपो में पुश किया, एंड देन somebody is going in GitHub and cloning your repo, and then installing all the tools and running it in their system. So it is like that only, but
हियर व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग इमेज बनाते हैं, लाइक बेसिकली इमेज क्या होता है, इमेज इज जस्ट लाइक क्लास, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लू प्रिंट कि हाँ उसको कौन कौन से टूल्स चाहिए, उसको कौन कौन से नो what its environment should look like, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इमेज में होता है। इमेज इज़ अ वेरी लाइट वेट फॉर्म ऑफ आवर एप्लीकेशन ओनली, वेयर एवरीथिंग इज डिस्क्राइब लाइक क्लास में हम लोग क्या डिफाइन कर, लाइक हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है, हम लोग ने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, एंड देन अनलेस और अनटिल वी आर क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ इट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, राइट। सो वैसे ही इमेज होता है, अनलेस और अनटिल हम लोग उसका एक इंस्टेंस कंटेनर में रन नहीं कर रहे हैं, देर इज नो यूज ऑफ दिस इमेज, ओके। सो इमेज को ऐसे ही समझो, वो क्लास की तरह, इट्स लाइक अ प्रूप्रिंट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि हम लोग अपने एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट करते हैं, एंड देन वी आर पुशिंग इट टू द Docker Hub. Docker Hub is similar to GitHub, okay, where we can host like GitHub host our codes and all. And in Docker Hub, we are just, it is like pushing our image, ठीक है, इमेज को हम लोग उसमें पुश करते हैं, एंड देन इट कीप्स आवर इमेज, एंड फ्रॉम देयर इफ इट इज पब्लिक लाइक आवर इमेज, अगर हम लोग को किसी को शेयर करना है, देन एनीथिंग शुड बी पब्लिक, राइट। सो अगर हम लोग का इमेज पब्लिक है एंड वी आर like asking someone, hey, I have created an image of my application, you should use this image, we will simply share the definition of this that image to the the users we want to share that, and then he will create a YAML file. In YAML file I will explain how a YAML file looks like, ठीक है। तो वो YAML फाइल में उसको शेयर करेगा, एंड देन ही विल basically pull that image back again from the Docker hub, ठीक है, and then he will create an instance of it and run it in that application in a container, ठीक है। so वो properly वो application उसको उसके local machine पे run कर रहा होगा, और एक जैसे हम लोग के उसी पोर्ट पे वो हिट कर रहा होगा जिस पे हम लोग ने उसको एक्सपोज किया है। वी विल सी ऑल दिस थिंग्स कि कैसे हम लोग इमेज पुल करते हैं, एंड देन हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस कंटेनर, एंड हाउ we are running an instance of it in our local machine, and how it is like making our application platform independent, ठीक है। सो अभी हम लोग ऐसा ही एक एग्जांपल देखेंगे in this DB setup, ठीक है। DB अभी हम लोग को सेटअप करना है, so what we are going to do, we are just going to pull a image of Postgres from Docker Hub directly, and then we will pull the image, and then we will run an instance of it in our local machine. So इससे क्या होगा, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग को बेसिकली एक सिंपल सा डॉकर कंपोज फाइल लिखेंगे। I will explain you how we can write this Docker file, and what are the commands to pull the image and run this particular image in the container. So now let's jump on this uh, that Docker compose file itself, so that it will be easier for you to understand like what I'm exactly saying. Okay. Now, okay. Let's go to see. Okay. Let's open the command prompt, and then okay, where we are. Okay, cd users. Which user should I choose? Cd. Okay, there are so many files. Okay, we have this Docker compose file here. Now, if we open this in our VS Code, we can see it properly, like what this Docker file has. So, okay, now
Let me open this Docker file first. Okay, it is already open. So we don't need this pg admin. ओके ठीक है अभी तो हम लोग ओके ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शायद दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स बट ठीक है लेट मी एक्सप्लेन दैट आल्सो सो ठीक है ये दिस इज हाउ योर यू नो डॉकर कंपोज YML फाइल लुक्स लाइक सो ये डॉकर कंपोज YML फाइल में हम लोग क्या करते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं like what services we are going to use and so see this postgres node and all these are known to everyone ठीक है it is public right so डॉकर कंपोज डॉकर हब में पहले से ही ये सारी इमेजेस अवेलेबल हैं वी विल सिंपली राइट postgres colon 70 and it will directly pull the image okay image of it ठीक है 17th वर्जन ऑफ द postgres it will pull ठीक है लाइकवाइज अगर हम लोगों ने अपना इमेज कुछ क्रिएट किया होता सो लेट मी सी कि सी गाइस सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी करना है लाइक डॉकर में सबसे पहले आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने सिस्टम में एंड मेक श्योर योर डॉकर इंजन इज रनिंग ओके सी इट्स राइट हियर रनिंग तो उसके लिए आपको लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल आइदर डेस्कटॉप वर्जन और CLI वर्जन इट इज अप टू यू लाइक it's according to what kind of software or OS you are using whether it is Windows Linux or a Mac okay so if I show you some images that I have created like it's showing let me see if we can see okay so see this is how your image will look like that you are going to create okay see this is all pulled images see for maneuver event like agent from last few weeks I am working on this agent so I have created a image of it so that we can deploy it easily so this is how your agent image looks like ठीक है तो ऐसे आपका दिखेगा आपका ऐसे नहीं डायरेक्टली दिखेगा कि दिस इज here we have written this postgres 70 तो ऐसे नहीं दिखने वाला है ठीक है हम लोग का कुछ ऐसे दिखेगा तो in instead of that we can put the image definition which we has there in what we have seen just now ठीक है तो अभी हम लोग इसमें क्या होता है सबसे पहले तो ये सर्विस सर्विस में क्या होता है वी डिफाइन कि कौन से कंटेनर में क्या रन करने वाले हैं हम लोग ठीक है वी विल इट इज अ पर्सनल image what like it is we are here defining here we are defining postgres की postgres service हम लोग रन करने वाले हैं ठीक है it is basically a name and nothing ठीक है now there comes our image so here in this image part we will basically provide the definition of like whatever the see every repo have some kind of some kind of unique URL so likewise this image will also have some kind of URL only okay so here if you see this is what here its URL look like okay which the image which I have created or you will create okay since this postgres is public entity so that's why uh, ये इतना शॉर्ट में इसका इमेज आपको दिख रहा है ठीक है postgres 17 ठीक है now we are giving our container a name container क्या है container is just like समझ लो कि कंटेनर इज लाइक बकेट ओनली ठीक है उस बकेट में आप आपको क्या करना है इट्स अप टू यू राइट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड इन दैट बकेट you put that simply in that bucket and you run your service ठीक है so उसको एक बकेट की तरह ही समझो एक कंटेनर की तरह समझो वो क्या करता है मेमोरी एक क्रिएट करता है एंड देन सिंपली इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी
we are not basically it's kind of VM only, but in that we are not installing anything. This image has everything, like everything we need. ठीक है? अगर हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन का कुछ भी बनाया तो उसमें ऑटोमेटिकली पाइथन और ये सारी चीज़ें पोस्टग्रेस वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. ठीक है? अभी उसके लिए हम लोग को हम लोग पे हेडेक नहीं है कि हम लोग को कोई चीज़ें इंस्टॉल करनी है. जब हम लोग इमेज बना रहे होंगे देन दैट इमेज should be having all those things. ठीक है, all those tools. ठीक है, जब भी हम कंटेनर अप करेंगे वो बेसिकली क्या करेगा, उसके अंदर जो भी version that image has, that blueprint has. ठीक है, वो जिस तरीके का वर्जन होगा वो सारे उसी वर्जन को, एग्जैक्ट उसी वर्जन को क्या करेगा, पुल करेगा. uh, और उसके लिए आप वो ये नहीं चेक करेगा कि वो कंपैटिबल है आपके सिस्टम से या नहीं. वो सिंस इट हैज़ इट्स ओन कंटेनर, उसका एक अलग से एक वर्चुअल मशीन टाइप का बना हुआ है, वो उसी में सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा और वो सिस्टम से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, that's why it is making our that helps, docker helps in making our application platform independent. ठीक है, machine independent. Okay, now we will define environment is basically ऐसे समझ लो कि secrets. ठीक है, secrets हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, लाइक पोस्टग्रेस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें यूजर का क्या नाम होगा, उसका पासवर्ड क्या होगा, एंड व्हाट वुड बी गोइंग टू बी ऑन डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है, what should be the DB name, we are passing it here. Now, see, by default, Postgres run in any system at this port only. ठीक है, इसी पोर्ट पे रन करता ही है. हम लोग का जो पोस्टग्रेस सर्वर होता है वो इसी पे रन करता है. जो लेफ्ट साइड का होता है ये जो है, ये एक्सपोजिंग वेयर एट विच पोर्ट वी वांट टू एक्सपोर्ट एक्सपोज आवर कंटेनर्स, कंटेनर का एंड पॉइंट, उसको हम लोग राइट लेफ्ट साइड में उसका पोर्ट देते हैं. ठीक है, जो भी हम लोग लेफ्ट साइड में जो भी हम लोग ने पोर्ट दिया होगा उसी पोर्ट के थ्रू हम लोग अपने कंटेनर में जो भी सर्विस रन कर रही होगी उसको यूज कर पाएंगे. ओके, एंड द कॉलन के बाद वाला जो राइट साइड में है उस वो क्या होता है, वो कॉल जो हमारा कंटेनर है, जो हमारा वर्चुअल एक मशीन टाइप का जो कंटेनर हम लोग का रन कर रहा है, उसके अंदर जो हम लोग का इंस्टेंस रन कर रहा है हमारे एप्लीकेशन का, वो किस पोर्ट पे रन कर रहा है, दैट इज दैट. ठीक है, दिस इज दैट. ठीक है, दिस राइट साइड इज दैट पोर्ट. ठीक है, तो राइट साइड कंटेनर के अंदर जो भी इंस्टेंस रन कर रहा है उसका पोर्ट, एंड कंटेनर के बाहर हम लोग को किस पोर्ट पे यूज करना है, दैट वी आर पासिंग इट हियर. ठीक है, सिंस बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग 5432, दैट इज पब्लिकली डिफाइंड. ठीक है, कि ये ही हम लोग यूज करने वाले हैं 5432, ये डेटाबेस के लिए ही यूज होता है, ये पहले से ही डिफाइंड है. ओके, नाउ नाउ देयर इज नथिंग. ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया है, ये मेरा एक अलग सा ऐप है. This is kind of a PG admin, like where we can connect our database simply, and we can check कि हम लोग का क्या डेटाबेस है, हम लोग को डेटा कैसे देख सकते हैं. ठीक है, कंटेनर में जाके डायरेक्टली देखना इट्स वेरी हेक्टिक टास्क. ठीक है, थ्रू this CLI it is very difficult to check the kind of data it is storing, like run also if we want to run some SQL queries, it is very difficult to run directly in that container and see the result. But using this PZ admin and what I am using, that DB ever, it is very easy to connect your database and basically run the SQL queries and check what data it has. ठीक है, now like मैं इसको भी आपको बता ही देता हूँ. सो सिंपली ये देखो, हम लोगों ने क्या किया, एक उसका इमेज पास किया है, उसके कंटेनर को नाम दिया है एंड उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल पास कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसको, एंड जस्ट वो 80 पोर्ट पे उसका सर्वर रन करता है. ठीक है, दैट पीजी एडमिन सर्वर, और वो 50
5050 पोर्ट पे हम लोग उसको एक्सपोज कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी डोंट नीड दिस, ठीक है, वी डोंट नीड दिस पीजी एडमिन, सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट फ्रॉम हियर। सिंपल, अभी तक आई डोंट थिंक कि कुछ डाउट होगा, इट इज़ लाइक वेरी सिंपल, ठीक है। अभी ये जो डेफिनेशन है आपको वीडियो में रिकॉर्ड कर, आप बार बार इसको देखना, थोड़ा रिसर्च करना, एंड देन यू विल गेट टू नो कि यू नो हाउ दिस डॉकर फाइल एग्जैक्टली वर्क्स, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे है, और बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जाना किसी भी गूगल में जाना, आप गूगल कर लेना, आपको सिंपली ये फाइल वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू टेक मच हेडेक अबाउट दिस, ठीक है। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि हाँ, डॉकर में अगर हम लोग को कुछ रन करना है, या फिर हम लोग को कुछ अपना ऐसा चीज़ रन करना है कि जो हम लोग अपने लोकल मशीन पे रन करें उसको डायरेक्टली, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है। वी इफ वी डोंट वांट टू पे, ठीक है, वी विल जस्ट यूज द डॉकर वर्जन ऑफ इट, ठीक है। उसको हम लोग किसी भी चीज़ का लाइक बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग को पे करना पड़ता है, बट हियर वी डोंट हैव टू पे anything. We can just locally run its server and in our Docker container, and then we can use it freely. सो सिंपल, अभी तक किसी को कुछ डाउट हो डॉकर में, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू up our container, and then we will connect our DB to our project. किसी कुछ डाउट यहाँ तक कुछ भी? ओके, वेल एंड गुड। नाउ ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम लोग लाइक अभी हम लोग कंटेनर बनाते हैं। सी, अभी तो कंटेनर आई थिंक रन कर रहा होगा, आई थिंक डॉकर में एक कंटेनर रन कर रहा होगा, that is of Postgres, ठीक है। let's stop this container, in fact let's delete it, take some time, let's just delete it. Okay, now our Docker container, there is nothing running, right? Now we will run a container of this Postgres in our local machine. So command for this is docker, see docker psc, what it will give कि uh, nothing running, ठीक है। this is the CLI command. Now we will see docker so अभी आपको क्या करना होगा, इस पे आना होगा, लाइक आपका जहाँ पे भी डॉकर कंपोज फाइल है, वहाँ पे आपको जस्ट ठीक है, वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। उस फ्लो पे आ जाना है, एंड देन what you have to do is run this command docker compose up, ठीक है। now it will automatically see what it is doing, you guys see carefully. It is just creating a container first. Container is created, now it is attaching a Postgres DB. Now it will pull the image, I guess, ठीक है। अभी इसने इमेज पुल करना स्टार्ट कर दिया है, and it is creating a database. Let's see. Now it started the server, created the database, and
it stopped the server, it started again, and database is shutting down, and now it started the PostgreSQL again, and then it is listening to this port, okay, and then it says कि database system is ready to accept the connection, ठीक है. अब connection is done. So now see अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें. आपका डीबीएवर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है. ये डीबीएवर में हम लोग देख पाएंगे कि लाइक वेदर लाइक इट इज रनिंग और नॉट, ठीक है. सिंपली हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि आवर पोस्टग्रेस कंटेनर इज रनिंग नाउ, ठीक है. नाउ इफ वी वांट टू सी कि उसमें उस कंटेनर में क्या डीबी है, क्या उसमें टेबल्स हैं, उसको देखने के लिए हम लोग इस ऐप से कनेक्ट करते हैं, ओके. नाउ इफ यू सी जेडीबीसी, ठीक है. अभी our database is schwl school. Let me check. Okay, we have created a database of name school. Our host is local, username is admin, and password is what we have passed, admin 123, okay. Now if first we will test the connection, okay. It is saying कि time zone का issue है. Now we'll go to the advanced and we will replace it. Now again we will test our connection. I hope that will resolve. Okay, see, connected in test, okay, and it is connecting to our DB. It means our DB is running now. Okay, let's connect with this. Let's finish this. ठीक है. अभी हम लोग के लोकल 5432 पे ये स्कूल का जो पोस्टग्रेस डीबी है ये रन कर रहा है. And now if we check our database, in that we will find कि ये this is school. What is its schema? Schema क्या क्या है टेबल में अभी कुछ भी नहीं है. It is inputting. Now we will see through projects through Python how we are going to create the schema, how we are going to connect this Postgres server, this database server to our project, and then we will try to figure it out कि how we are going to create our APIs and how we are going to create our tables and all, ठीक है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं. Let's start creating a demo project for this, another demo project for this. So let's create a mkdir. ओके, स्कूल का एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो स्कूल ही बोलेंगे, ठीक है. नाउ cd school and we will open this, ठीक है. अभी now we can close it. Okay, so let it load. Okay, so अभी है हम लोग के पास एक हम लोग ने एक फोल्डर बनाया है सिंपली आवर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए. दिस इज द डेमो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो नाउ आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव लाइक टॉट यू इन प्रीवियस सेशन कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है. फॉर दैट कमांड इज पाइथन -m venv space venv, okay. uh, venv, okay. Now if we click enter, I guess
Let's start this. Okay, it will take 2 3 minutes. Let's wait for that. Then we will activate this and we will install our packages. And then we will create a simple project structure and then we will create our database connection. Till now, anyone has any doubt, then you people can ask. जब तक ये install हो रहा है. अच्छा, how many of you joined little late in this course? Like आपने कुछ दिन बाद join किया इस course को. कोई है यहाँ पे? Like आई एम आस्किंग कि सब लोग यहाँ से पहले सेशन से हैं या फिर किसी ने बीच में ज्वाइन किया है कि लाइक अ वीक और सो. ओके, एवरीवन इज फ्रॉम फर्स्ट क्लास. ओके, गुड. लेट्स सी. Okay, so now our environment have been created. Now we will activate it. Can anyone tell command for that? We have used in our previous sessions. Anyone? You people are revising previous sessions or just seeing the video and going like you people are practicing everything? कुछ बोलो भाई प्लीज. Not now. What are you like? करते क्या हो आप लोग? रंजन, may I know? You people should revise that. Like whatever we are, please mute your mic. Huh? So whatever we are doing here in our session, you should be going and trying to try to implement that. That's why I am sending recording session of these, these classes. So आप लोग रेगुलरली इसको प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग दिस. It is going to be very very tough for you.
See, if you people are not that serious about this, then there is nothing to worry about. Like मुझे भी उससे कोई बहुत ज़्यादा खास मतलब है नहीं. Okay, if you people are practicing well and good for you, I don't think कि you people have that spark कि मैं आप किसी में किसी भी आप में से किसी एक को भी like अभी रेफर कर पाऊँ, because you people haven't shown me that spark yet. I don't think you have that in you, because I haven't like seen कि जब भी मैंने like previous classes के बारे में some कुछ भी पूछा, और you people are completely blank about that. So ठीक है, this is like uh, आपके ऊपर है, like whatever you want to do you can do. Yep. चलो let's continue this. So in last class we have seen key. Okay, we have created our environment. Now we will activate it, and command for that is very simple. It is venv forward slash scripts forward slash activate. ठीक है. Now our virtual environment is activated. Now can anyone tell कि virtual environment हम लोग क्यों बनाते हैं? इतना तो it hope so किसी को पता होगा. Come on guys. Good, very good. ठीक है. I'm not going to explain again that why we are creating this virtual environment. Now we will simply install our packages. Now first we will install our fast API package. I have explained this in previous sessions. Why we need fast API, why this fast API is important. So we will simply install this now. API. Happy? Who is this? Bloody rascals are coming here and trying to. See, if you people are sharing link and this is not going to be good for you people, I will simply stop taking the session, and like I have whole rights. ठीक है, मैं कल से क्लास लेना बंद कर दूंगा, और मैं इनफैक्ट बंद भी कर रहा हूँ. लेट्स एंड दिस सेशन टुडे and do whatever you want.